आवाज आ रही है दी? अब आ रही है दी आपको आवाज? हाँ शिवानी, Are you able to hear me now? अब आ रही है आपको आवाज दी? हाँ आ रही है मुझे। ओके So Megha, what I'll do now, I'll be sharing the PPT from my laptop and I'm giving the talk on my phone. Okay. ओके I दी, think so there is some. दैट्स नॉट एन इशू। Mm, हम लोग शुरू करें okay. दी वर्कशॉप या 5 मिनट वेट करें हाँ बच्चों हाँ के लिए? as you wish. क्योंकि 38 स्टूडेंट्स के आसपास अभी हैं। हाँ शुड वी स्टार्ट? I'm ready. You just see according to your arrangements. You want to wait for more or not? I'm prepared. Okay, should we start with the workshop? Students will join on. Uh, Okay. it is my pleasure to introduce you to Dr. Swanlata. She is an assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Social Science, Banaras Hindu University, Varanasi. She received her PhD degree in psychology from University of Lucknow and has earned UGC Research Fellowship for her PhD work. She has also received the Professor Kali Prasad Memorial Research Prize for the year 2010 for the best PhD thesis in Department of Psychology. She was a project officer, capacity building for the Saksham, that is the GFATM project at Department of Psychology. She has got 12 years of research and teaching experience and has published more than 30 research publications of national and international repute. She was also consulting psychologist at Career Guidance and Counseling Cell, Student Welfare Center, BHU. She is the course coordinator of PG Diploma in Counseling and Psychotherapy, Department of Psychology, Banaras Hindu University. She specializes in clinical and counseling psychology, and her current research interest includes HIV/AIDS, mental health, stigma, positive psychology, and health psychology. We welcome you, ma'am, to give us your views on the personality theories topic. Thank you so much for joining us. Ma'am, the floor is all yours. Thank you so much, Megha. I'm just feeling as if I'm in the department right now, and I'm remembering my old days when I used to be there. I really miss the department and the faculty and everyone you there. So, good evening, friends, students. दीदी आवाज बहुत I'm स्लो है आपकी। okay. Okay, so I'm starting with my presentation. How is it now? Is it better? It is better. It is better. Okay. So, are you able to see my PPT No, the not now. now?
भी नहीं दिख रही दी. It's not showing? No Yes, दी. ma'am. It's showing. Ma'am, it's showing. It is so Yeah, it's showing. showing to me. Yeah, it's showing to me Yes, also. ma'am. Okay दी, then you may start because I am unable to see it. That is okay if students can see it. Okay, even it's visible on my phone also. Okay दी. Okay. Okay. So students, my today's lecture is on personality theories. I'm starting with the dispositional theories or commonly called trait theories. We all know that the trait and type approach, it is the dominant method of personality assessment these days. Personality is described in terms of the traits and types the person possesses. The theorists, they try to analyze, classify, and interrogate traits and types among different people and try to uh, analyze that to which personality they belong. Now, coming on to what are the traits? The traits are the underlying psychological structures that predispose people to act in a particular manner. They are responsible for the individual differences among the population and they describe that why a person behaves differently in different situations. Trait is a theoretical concept, it's a theoretical construct, and it's the basic dimension of personality. It is considered as a relatively enduring attribute or quality which individual possesses and it differentiates him from the another. What are the assumptions of trait theories? The trait theory emphasizes individual differences among people, their characteristics, different characteristics, and how these characteristics can more or less be stable across time and across situations. The trait approaches emphasizes the measurement of these traits through psychometric tests, through self-provoked questionnaires, and it aims to assess the personality type of the person. Starting with Allport's perspective on personality, Allport emphasized the uniqueness of the individual. He wanted to study in depth every individual, a single individual, according to him, should be studied in depth in order to study his personality. He called the study of the individual morphogenic science and contrasted it with the nomothetic method used by most other psychologists. Morphogenic methods are those methods that gather data on a single individual. And the nomothetic methods are those methods which study on group of people. They gather data on group of people and then make conclusion. Allport also advocated eclectic approach of theory building. Eclectic approach means drawing important, significant concepts from different theories and compiling into a one and then implementing that theory. Now coming on to how did Allport describe personality? Allport reviewed 49 definitions of personality relevant present at his time, and on the basis of that, he made his definition, which is personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment, characteristic behavior, and thought. His definition can be understood by understanding each and every term used in the definition. First of all, he says that it is a dynamic organization. So personality is a dynamic organization. It means that it is subject to change. It is not static. It is constantly growing and it is changing. It is a developmental process and it goes on uh, flourishing. The second term used in it is organization.
Organization means that personality is an active organization. It is an inter integration. It is interrelated of various aspects. It's organized. It's patterned, and a normal healthy personality is having a highly correlative structured organization of personality. The abnormal personality have disorganization of all these interrelated aspects. The abnormal personality is, does not have a organized and patterned structure. The term psychophysical system means that personality is having both psychological and physical aspects. It is comprised of both. It is comprised of habits, attitudes, emotional states, sentiments, motives, and beliefs, all of which are psychological, but they have physical basis in the individual's neural, glandular, or general body states. Thus, personality is neither exclusively mental nor exclusively physical. It entails the functioning of both mind and body. The next term used in the definition is determinative. Determinative means that it has a motivational force that shapes the personality. It emphasizes the motivational roles of the psychophysical system. It means that it has directive influence upon all the adjustive and expressive acts by which the personality comes to be known. Allport gave, gave the statement that personality is something and does something, which means that it is not a mask that we wear, nor is it simply a behavior. It is something influential. It is something important and does important tasks. The term characteristic, the characteristic term means a mark, a stamp. So personality is just like a mark or a stamp, and it gives identity to the person. It refers to the distinctiveness or uniqueness of one's personality. So the term characteristic means that all persons stamp their unique mark or engravings on their personality, and by this they are recognized in the society. Unique, the term unique means that it's highly individualized. The traits may be highly individualized, they may be present in one person and may not be seen in the other person. They are specific to the people possessing them. The term adjustment to the environment means that Alport emphasized that the adaptive and coping function of personality. Personality, it results from the attempts of the central nervous system to establish security and comfort for the individual. These adaptations are unique to each individual because of differences in their heredity and environment. So, according to Alport, the basic unit of personality is the traits, and listing a person's traits, it provides a description of that person's personality. These traits, they provide direction to behavior. They determine a person's behavior. They are invisible and can be felt. They leads to the development of personality. It leads to the development of uniqueness in personality. It can be heredity also. They can be learned also. They are developed and affected by society. They are dimensions of behaviors in which individual differs from one another. Now, coming to the classification of traits, Alport has classified traits as individual, common, and unique. Individual traits are the traits which are possessed by only one person. Common traits are the ones which are possessed by many persons, and unique traits are the traits which is a status of psychophysical realities, and they are unique in the person.
Now the correct categorization of traits on the basis of how extensively they influence the personality. So on the basis of this, the traits are classified as central, secondary, and cardinal. The central traits provide global picture to the personality. They are the main characteristic of personality. They make one's identity. It affects behavior. The characteristics that summarize personality are termed as the central traits. For example, short tempered means having self confidence. The secondary traits, they are less organized, they are less consistent, they are less active. They are not very important for the personality development. They arise in special situations and they do not affect behaviors, for example, with the personal preferences. The next are the cardinal traits. Cardinal traits are very specific. It's the eminent trait, ruling passion, and the master sentiment. It affects person's whole life, his philosophy, and it's not shared by all, it's not present in all. It dominates the person, and the people who have such type of traits, they have high pervasive single trait and they give identity to the person. Only very rarely do people have the cardinal traits. For example, the trait of non-violence in Gandhiji, aggressiveness in Napoleon. Now, the level of integration of personality according to Allport, the traits, attitudes, and habit. According to Allport, the personality is arranged in a hierarchical structure. At the lowest level of integration are the conditioned reflexes. These become associated over time to form habits, and a higher level of integration leads to the development of self. This is the way least integrated are the reflexes. They get integrated to form habits. Habits integrate to form attitudes. Attitudes integrate to form traits, and this lead to the formation of self. Alport gave the concept of propria. He said if traits are considered the basic units of personality, then proprium is the core of personality. And it includes all the aspects of individual's personality that are considered personally his or her own. Proprium helps the person define the self, sense of self, and it includes all the vital and essential physical, psychological, and social aspects of life. Now, how does this proprium develop? So, what are the stages of development in proprium? The proprium develops gradually throughout a lifetime. When a newborn is born, he is not having his personality and it develops through stages. So Alport has given the stages of development of proprium, and the first stage is the bodily self, sense. The proprium begins developing in infancy with the sense of bodily self. Here, the child he starts recognizing, he starts discovering that this is my hand, this is my eye, and if the eye goes into the hand, I'll have pain. He has all these bodily senses. He starts experiencing all these uh, uh, things. The second stage is the self identity stage, and this is the second achievement of appropriate development, and it begins in the second year of life, that is from 1 to 2 years, and it continues until about 4 to 5 years. And during these years, the child develops a sense of self identity. He gets to know that he is a separate person and he recognizes himself by his name. He starts recognizing what are the things that belongs to him. The third stage is the ego enhancement stage. It's from age 2 to 3. The child begins working on self esteem. He starts developing pride on himself, the works he is able to complete, the work he accomplishes. He starts developing pride on all those achievements. Ego extension continues further. The fourth stage is continuation of ego extension, and it is at the early stage of 3 to 4 years. The child begins to identify with his or her ego extensions, such as personal possessions. This is my bike, and this is my toy. This process continues into adulthood. Beside, besides possessions,
The individual identifies his love objects, his idols, his loyalties. The next stages of self-image. Here the it includes both evaluation of our present abilities, status, and roles, and our aspirations for future. The child between 4 to 6 years, he becomes capable of formulating his future goals and is aware of analyzing what is good and bad for him. The next stage is of rational agent. It is during the middle childhood years, 6 to 12 years. The child is thought to be as a rational cooper. The child is busy solving problems, planning ways of doing things, and skills that are practiced at school. Because right now he is going to the school, he is actively academically involved in the academic works. The next stage is of appropriate striving. It begins in adolescence. It is ego involved motivation that has directedness or intentionality. At this time, some defining objects become the cement holding a life together as the person becomes capable of genuine ideology and career planning. The next stages of the knower. Alford described the development in adulthood of the self as knower. The adult cognitively integrates the previous seven aspects of self into a unified whole, and this view that emphasizes Alford's conviction is here that the unity is a characteristic of mature personalities. So, this is how the proprium develops across the 8 stages. Alford gave one more concept of functional autonomy. It is the energy and the motivational source behind the development and operations of the proprium. It is the motivational force behind personality. It has high motivation. Although traits begin as adaptive strategies to satisfy needs, ultimately the traits lose their close connections with their origins and begin to function independently of its origin. This motivational force is of two types. This motivational force, functional autonomy, is of two types. One is the preservative functional autonomy, and the other one is the appropriate functional autonomy. The preservative functional autonomy is the primitive motivational system that accounts for the expression of many repetitious behavior patterns and a desire for routine and familiarity. They are the behavior that have been repeated and practiced for many years, and now they have become the habit. The appropriate motivational style, functional autonomy is a higher level of motivation that helps the people to develop beyond their original level. They are those aspects of their lives that give them the sense of self awareness. For example, many behaviors they are repeated, they are done in order to maintain a good self image and lifestyle. So the proprium and the functional of autonomy they operate dynamically in the developmental process of the emotionally healthy and mature individual. Alport has given several qualities of mature adult. They are warm human interaction. A mature adult will be engaging in warm human interactions. He will be having the capacity for social interactions that are sincere, friendly. He'll be having emotional security, self acceptance. The healthy individuals are emotionally secure. They accept themselves. They have high self esteem. The healthy individuals, they have realistic perception, skills, and assignments. They realistically perceive the world. Both unrealistic optimism, like convention, like this lottery ticket is going to be a winner, and unrealistic pessimism, such as the expectation of falling at everything, is avoided. So, the healthy individual, he has realistic perception about the world. The next quality about a mature adult is self
objectification, insight, and humor. Mature individuals are capable of self objectification. They see themselves accurately from an objective perspective with insight and with usage of humor. The next quality is extension of the sense of self. The healthy individuals have a variety of interests. They can talk on any topic. They entertain themselves. They have a good repertoire of skills to do and accomplish. Next quality is that they have unifying philosophy of life. A healthy and mature individual has a philosophy in life. For some, it is religious philosophy in life. For some, it is social service. For some, it is academic works. So it depends and varies from person to person depending on their priorities. Now I take the second theory, the factor analytic trait theory by Cattell. Cattell's factor analytic trait theory is quite popular as because in today's era of computer technology and data analysis methods, it is quite relevant. The factor analytic theory, they use the power of computers to systematically examine and organize the data. Factor analysis from the field of statistics, as you all know, it is an essential tool for which is used uh, that is based on the concept of correlation, and it's a research tool as important to psychology as microscope is to biology. According to Cattell, personality is that which permits a prediction of what a person is going to do in a given situation. Traits, according to him, are the units of personality that have predictive value. Traits defines what a person will do when faced with a defined situation. They are the abstract concepts, conceptual tools, which are useful for predictive purposes, and they are the determiners of behaviors. According to Cattell, there are two types of traits, common traits and unique traits. Common traits, it is a part of everybody's personality. Unique traits, they are characteristics specific of each individual. He has given one more classification of surface traits and source traits. Surface traits are the traits which describe a person more or less readily on the basis of the apparent traits which are visible. The term surface indicates that though they appear on the surface to be a trait, there is no evidence that they are really a trait in any enduring sense. They are seen overtly, they are the expressions of behavior. It may be related to some special situation, but it may also change according to time. The source traits, they are deeper hidden patterns which can be felt. These source traits, they provide base to the personality. They are not overt. They affect our efficiency and temperament. Cattell has also talked about ability traits, temperament traits, and dynamic traits. According to him, ability traits is the individual's capacity to attain his or her goals. It reflects individual skills or ability to solve problems. Ability traits define various types of intelligence and determine how effectively a person works towards a desired goal. He has distinguished two types of intelligence, the fluid intelligence and the crystallized intelligence. Fluid intelligence is the innate ability to learn, whereas crystallized intelligence, it includes the effect of education. Cattell has also devised a culture fair intelligence test to measure fluid intelligence.
It aims to provide a better assessment of the intelligence of people who may be educationally deprived or poor. The next type, the temperament traits. They are the biologically based inherited personality characteristics. It involves emotional qualities, affective styles of behavior. It reflects individuals' general style of behavior. They are largely constitutional inherited source traits that determine the general style and tempo with which a person carries out whatever he or she does. Dynamic traits, they are the motivations. It involves motivations or putting the individual into action. It's the individual's level of motivations. The dynamic traits are motivational in nature. They provide energy and direction to action. Some motivations are innate and some are learned. And on the basis of innate and learned, they are further divided into ergs and meta-ergs. Ergs are the innate dynamic traits. Meta-ergs are the learned dynamic traits. Ergs are the innate dynamic traits that direct an individual towards a goal and provide motivational energy to obtain it, whereas meta-ergs are environmental mold dynamic source traits. They are learned motivations and they can range from very general, like from the country, love for the country, esteem of education, to specific ones like love for any dedication for any particular political candidate. The ergs, they are innate motivational traits or constitutional dynamic source traits. They involve an innate reactivity towards a goal. The examples of ergs are anger, curiosity, fear, greed, hunger, loneliness, pity, pride. And the examples of meta ergs are, as I told to you, love for the country, dedication towards a particular political party. And all. So, ergs and meta ergs, they are the dynamic traits. They are motivational in nature. They are activated by the situation. They help the people to select goals. They stimulate emotional response to certain objects. These motivational traits cause people to perceive selective opportunities for satisfying goals. Now, there are sentiments and attitudes. Sentiments are the deep underlying dynamic structures in personality that are formed early and are generally enduring. They include sentiments towards home, family, hobbies, religion, among others. They are the general meta ergs. The most important sentiment is the master motive, also known as the master motive, and self sentiment integrates with various sentiments and interests of the individual. So, sentiments, what are they? They are the dynamic structures, they are the type of meta ergs, they are the general meta ergs which we develop towards home, family, hobbies, towards any specific religion, etc. Attitudes, they are the specific expression of sentiments. Now, whatever sentiments we are having, the expression of these sentiments are our attitudes. For example, you have very strong sentiments for your family and you express this by practicing Thanksgiving with the family on the Thanksgiving day. So, attitudes are the expressions of sentiments. They are the specific response to particular stimulus situation. Cattle defined attitude as an interest in a course of action in a given situation. Now, how are all these uh, traits arranged? So, it's the concept of substitution explains it. Through a process of learning,
The basic drives, the ergs, they are satisfied by multi-step sequence of purposive activity. The environment demands this type of learning. Some instrumental acts need to be done before achieving the basic goals. For example, we need to work in order to eat, so working is the motivation to eat. So the how what are the location or how are they arranged? The meta ergs, they are subsidiary to ergs. Attitudes are subsidiary to sentiments, and the instrumental goals along the way to achieve the goal are known as the subsidiary goals or means and end activities. This subsidization relationship, according to Cattell, is the dynamic lattice. The dynamic lattice explains that attitudes are subsidiary to sentiments, sentiments are subsidiary to erg, and the lattice or the channel, it shows the connection among these attitudes, sentiments, and ergs. The meta ergs are of two types, attitudes and sentiments, and they are learned. Their connections with one another and with the ergs are affected by learning. Sentiments may be connected to many ergs, and through development, these connections change. Ergs are seldom satisfied directly, they are satisfied indirectly through the meta ergs. Cattell developed the questionnaire to measure the source traits. Cattell's 16PF questionnaire has 16 multiple choice scales, each measuring one underlying source trait. Each factor is identified with a letter indicating the order in which it is emerged from the factor analysis. So, though there are 16 source traits in this inventory, the first half dozen or so are the most important in describing the individual differences. The set of scores on all factors is the profile of an individual, which can be diagrammed in a graph, and the researcher interprets the profile to make the statements about the individual's personality. So, this is the profile which is generated after administering the 16PF question. Cattle has also emphasized on the types of data, Q data, T data, and L data. The most widely used type of personality test is to ask questions to describe themselves in the response to a set of questions. So the paper and pencil self-report test, they provide the questionnaire data, and these paper pencil self-report data is called by Cattell as the Q data. Tests like in-block test, finger tapping, reaction time, which can test faking and avoid faking by the respondent. And in this, the purpose of the test is hidden and the measurement is done in an indirect way. This type of data is known as the T data. The T data is a data collected by administering the test in a hidden way. The data collected by studying the life history of the individual, by studying the life records of the individuals, for example, school record, autobiographies, diaries and all, the data derived from them, they are known as the L data. So these are the different type of data mentioned by Cat. Now we come to Ising's trait theory. The personality theory by Hans Ising has strong psychometric and biological component. The dimensions extracted by Ising are extroversion, neuroticism, and psychotism. Ising regarded all the three factors as a part of normal personality structure. All the three are bipolar, with extraversion being at one end of factory and introversion on the opposite side, neuroticism on one pole and stability on the other one, psychotism on one pole and superego on the other end.
Extraversion concept, uh, they are the people who are characterized primarily by sociability, impulsiveness, but also by liveliness, quick wittedness, optimism, and other traits indicative of people who are rewarded for their associations with people. Whereas the people on the other end, the introverts, they are characterized by traits opposite to that, those of extroverts. They are quiet, passive, unsociable, careful, reserved, controlled, pessimist, and thoughtful. According to Ising, the primary cause of difference between the extroverts and the introverts is the cortical arousal level. It is a physiological condition that is largely inherited rather than learned. The second factor of Ising's theory is neuroticism slash stability. Ising reported several studies that have found evidence of a genetic basis for such neurotic traits as anxiety, hysteria, and obsessive compulsive disorders. People who score high on neuroticism, they have tendency to overreact emotionally, have difficulty returning to a normal state after emotional arousal. They frequently complain of physical symptoms such as headache, backache, vague psychological problems such as worries and anxieties. Ising assumed that people at the healthy end of the neurotic scale have the capacity to resist a neurotic disorder even in the periods of extreme stress. High neurotic scorers suffer a neurotic reaction as a result of only minimal level of stress. Even in a situation of mild stress, they suffer a high level of neurotic reaction. Psychotism slash superego. The with people who are high on P score, they are egocentric, cold, non-confirming, impulsive, hostile, aggressive, psychopathic, and antisocial. Whereas the people who are low on psychotism, they are altruistic, highly socialized, empathic, caring, cooperative, and conventional. The diathesis stress model suggests that people that high P scorers are genetically more vulnerable to stress than the low P scorers. During period of little stress, high P scorers may function normally, but when high psychotism interacts with high levels of stress, people become vulnerable to psychotic disorders. The next theory is the big five factor model of personality, learned by the acronym OCEAN. It was given by Robert M. McCrae and Paul T. Costa. They have given five factors to explain personality. The first factor is neuroticism. The people who score high on neuroticism, they tend to be anxious, temperamental, self-pitying, self-conscious, emotional, and vulnerable to stress-related disorders. Individuals who score low on neuroticism are calm, even-tempered, self-satisfied, and unemotional. The second factor, extroversion. The individuals who score high on extroversion, they tend to be affectionate, jovial, talkative, joiners, and fun-loving. And in contrast, the individuals who score low on extroversion, they are likely to be reserved, quiet, loners, passive, and lacking the ability to express their emotions. The next factor is openness to experience. It distinguishes people who prefer variety from those who have a need for closure and who gain comfort in their association with familiar people and things. People who are high on openness to experience, they seek out different and varied experiences, whereas in contrast, people who are not open to experiences,
They stick to a familiar item, one, and they stick to only one they enjoy, they like the most. People high on openness to experience tend to question traditional values, whereas those low on openness, they tend to support traditional values and to preserve a fixed style of living. So the people high on openness, they are creative, imaginative, curious, liberal, and have a preference for variety. Whereas those who are low on openness to experience, they are conventional, down to earth, conservative, and lack curiosity. The next factor, according to the five factor model, is agreeableness. The agreeableness is distinguishes soft heart people with ruthless ones. People who score in the direction of agreeableness, they are trusting, generous, yielding, acceptant, and good natured. Whereas who score on the other direction, they are stingy, unfriendly, suspicious, irritable, and critical. The fifth factor is the conscientiousness. It describes people who are ordered, controlled, organized, ambitious, achievement focused, and self disciplined. The individuals who score high on conscientiousness, they are hardworking, punctual, and preserving, whereas the people who score low on it, they are disorganized, negligent, lazy, aimless. And so together, all these five dimensions make up the personality traits of the five factor model, often referred to as the big five. Now there is one more classification on the basis of type, and this is given by Friedman and Rosen. It gives personality types: type A, type B, and type C. We'll be quickly discussing the characteristics of the type A people. The individuals belonging to the type A category are hard driven and competitive. They are always in constant pressure. They strive for recognition and advancement. They undertake multiple activity with a deadline and for completion. They are well alerted, competent, and efficient. They are likely to become hostile, impatient, anxious, and disorganized, but only under the stressful conditions. The characteristics of type B people is opposite of type A people. These people are quiet, they are easygoing, non-competitive, placed, they wither stress easily. They may be little dull as compared to the type A people. The type A individuals, they have a higher risk for cardiac heart diseases. And the third type is the type C. Such type of people suppress their negative emotions and they comply with the according to the orders of the authority. Now I take the humanistic theory, which is known as by Maslow, Abraham and H. Maslow. It's the holistic dynamic theory. Maslow in 1970 made the holistic dynamic theory that assumes that the whole person is constantly being motivated by one need or the other, and that people have the potential to grow towards the psychological health, that is the self actualization. To attain self actualization, people must satisfy lower level needs first, such as hunger, safety, love, and esteem. Only after these are satisfied, person can reach for self actualization. So the hierarchy of needs according to Maslow are the hierarchy of need concepts assumes that the lower level needs must be satisfied or at least relatively satisfied before higher level needs
become motivators. The five needs comprising these hierarchy are known as the cognitive needs, meaning that they have a striving or motivational character. He has listed these needs in order of their prepotency: physiological, safety, love and belongingness, esteem, and self actualization. The physiological needs include food, water, oxygen, maintenance of body temperature. Perpetually hunger people are motivated to eat, not to worry about self esteem. So the first person satisfies his physiological needs, then he moves to the higher one. The next need is the safety needs. When the people have satisfied the physiological needs, they then become motivated to go for the safety needs, which include physical security, stability, protection, dependency, freedom from threatening forces such as war, terrorism, illness, fear, anxiety, chaos, and natural disasters. The needs for law, order, and structure are also the safety needs. After people partially satisfy their physiological needs, their safety needs, then they become motivated by love and belongingness needs, such as the desire for friendship, the wish for a mate and children, the need to belong to a family, a club, a neighborhood, or a nation. Love and belongingness also include some aspects of sex and human contact, as well as the need to both give and receive love. To the extent that people satisfy their love and belongingness needs, they are free to pursue esteem needs. Esteem need includes self respect, confidence, competence, knowledge that others hold them in high esteem. Maslow identified two levels of esteem needs: reputation and self esteem. Reputation is the perception of the prestige, recognition, fame the person achieves in the eyes of others, whereas self esteem is his own feeling of worth and confidence. When the lower level needs are satisfied, people proceed more or less automatically to the next level. Once esteem needs are met, they do not always move to the level of self actualization, but Maslow assumed that self actualization needs become potent whenever the self esteem needs are met. Self actualization needs include self fulfillment, realization of one's potential, desire to become creative in the full sense of the word. People who reach the level of self actualization, they become fully human, satisfying needs. They maintain their feeling of self esteem even when rejected, scorned, or dismissed by other people. They are not dependent on the satisfaction of either love or esteem needs. They become independent from the lower level needs that gave them birth. According to Maslow, along with these five cognitive needs, there are aesthetic, cognitive, and neurotic needs also. The satisfaction of aesthetic cognitive needs is consistent with the psychological health, whereas the deprivation of these two needs result in pathology. Neurotic needs lead to pathology whether or not they are satisfied or not. Aesthetic needs, they are not universal, and some people in every culture seem to be motivated by the need for beauty and aesthetically pleasing experiences.
People with strong aesthetic needs desire beautiful and orderly surrounding, and when these needs are not met, they become sick in the same way that they become sick when their cognitive needs are frustrated. People prefer beauty to ugliness. They may even become physically and spiritually ill when forced to live in the disorderly environment. Cognitive needs, most people have the desire to solve mysteries, to understand. They are curious. They want to know more. They want to have more information. And these desires are known as the cognitive needs. And when these cognitive needs are blocked, all needs on the Maslow's hierarchy are threatened. Maslow believed that healthy people desire to know more, to theorize, to test hypotheses, to uncover mysteries, to find out how something works just for the satisfaction of knowing. People who are not satisfied their cognitive needs, they have been consistently lied to, they have their curiosity stifled, or have been denied information. Such people become pathological, a pathology that takes the form of skepticism, disillusionment, and cynicism. Neurotic needs. According to Maslow, the satisfaction of cognitive, aesthetic, and cognitive needs is basic to one's physical and psychological health, and their frustration leads to some level of illness. Neurotic needs need only to stagnation and pathology. Neurotic needs are non productive, they perpetuate an unhealthy style of life, and they have no value in the striving for self actualization. They are reactive and they serve as compensation for unsatisfied basic needs. According to Maslow, the characteristics of self actualizing people, the self actualizing people are more efficient. Swarnata ma'am, Yes, I should wind up. the next speaker, yes, the next speaker has joined. I want 2 to 3 minutes if students have any questions. Okay, okay. I'm just displaying the slides of the. Uh, and this is how I'm winding up. Okay. Anyone is having any doubt, they can ask. Students, And please, I if will you have like to any questions share. about any theories, please ask. And I like to share this PPT with you, Megha, so that they can get all this matter in the form of notes also. Sure, ma'am, sure. Hmm. Students, please, if you have any queries, please let ma'am know so that she can solve your problems, solve your queries. I don't think they have any questions. Yeah, Uh, I thank you for okay. giving such a wide description about the various personality theorists. And I'm really honored that our students got an opportunity to learn from you so that they can be using it for their UGC NET examination. Thank you so much, ma'am. Thank you so Hmm. much. Thank you, Thank you, Megha. ma'am. Thank you. Thank The you. department would like to share with you your certificate of appreciation. Uh, Okay. Thank you so much. Thank you. okay, thank you, Dee. Hmm. Thank Our next speaker, Mr. Nikhil Kumar Das, has joined, I suppose. हेलो मेगा. Hello, sir. How are you? फाइन, क्या हाल है?
हेलो I निखिल, am कैसे हैं? हाय अर्चना, बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया। एमटी में कुछ काम था, बस घर वापस जा रहे हैं। ओके ओके ओके। मैं कहा चलते चलते हेलो करते चलें। नहीं नहीं, सो बढ़िया है। नाइस टू यू। I'm really honored uh, to introduce you to Nikhil Kumar Das sir, who is working as an associate professor in psychology at JS Hindu PG College, Amroha since 2001. His specialization is clinical psychology from National Institute of Mental Health and Neuroscience, Bangalore, which is most popularly known as NIMHANS. He's a registered Rehabilitation Council of India as clinical psychologist and has his specialization in anxiety disorders and addiction. He's interested in psychological assessment, completed certificate in psychological assessment from NIMH Sikandarabad. So he has done a certificate course in de-addiction from NIMHANS Bangalore and is actively engaged with student career counseling. He has also conducted various workshops and psychological assessment in different universities and college. Sir, I welcome you to get an inspiration from you, and our students will learn from you in terms of cognitive behavior therapy. Thank you so much, sir. The floor is all yours. Thank you, Megha. Megha, just one thing. How can I share my slides? I'm not Sir, seeing any options. there is an option of slide sharing. Okay. किसी और की स्लाइड शेयर हो रही हो तो प्लीज बंद कर लीजिए। सर आप शेयर करके देखिए। हाँ, मुझे वो ऑप्शन एक्चुअली दिख नहीं रहा था, इसलिए आई थॉट कि जी आई जी, विल अब जस्ट चेक। आ गया सर? नहीं, मेरे इस पे आ नहीं रहा है। ओके। कैन एनीवन हेल्प सर? सर हाँ, देयर इज एन कैन ऑप्शन एनीबडी हेल्प मी? सर जिधर माइक है वहां पे 3 डॉट्स होंगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो शेयर स्क्रीन आएगा। ओके, माइक के पास तो 3 डॉट्स नहीं है। We'll see. एक मोर ऑप्शंस का है, इसमें आएगा कहीं पे? यस सर। शिवानी, विवेक, प्लीज हेल्प मोर सर। ऑप्शंस में, सेटिंग्स में। सर देयर इज अ ऑप्शन ऑफ प्रेजेंट नाउ। एक स्मॉल सा बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर, और उसमें एक एरो मेरे में एक्चुअली कुछ ओवरलैपिंग आ रहा है, जो कुछ सिंबल्स है ना, तो आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। कुछ उसमें ओवरलैपिंग आ रहा है। सर आप मोबाइल से जुड़े हैं या उससे जुड़े हैं? मैं लैपटॉप पे हूँ। लैपटॉप में सर एक ऑप्शन आता है 1 2 3। दिस इज द फिफ्थ ऑप्शन, a small square box with an arrow in it. Okay, present now. Okay. Yes, Okay, sir. got it. Okay, is it visible now? Is it visible? स्टूडेंट्स आप लोग को दिख रहा है क्या? No, ma'am. सर अभी नहीं शेयर कर रहा है। अभी नहीं शेयर कर रहा। ओके। Yes, ma'am. Now it is visible. Now it's visible. Okay. Yes, sir. Okay. Good evening, everybody. Thank you, Megha, for introducing myself. मुझे बताया है कि
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही प्रेफर करेंगे, तो मैं भी अपना प्रेजेंटेशन मिक्स लैंग्वेज में रखूंगा। लेकिन थोड़ा सा है कि जो टर्म्स होंगे वो मैं इंग्लिश में ही उसकी बात करूंगा, अदरवाइज मिक्स लैंग्वेज में ही हम चलेंगे। जो मेरा टॉपिक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वैसे तो ये काफ़ी लंबा है, और तो मेरी कोशिश है कि जो थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हमें समझना चाहिए उन्हीं को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें मैं इसमें ना कवर कर पाऊँ, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस मे बी इन द एंड, या आप मेरा ईमेल आईडी है इसमें, या आप वैसे भी मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ओके, जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं, तो उसका एक बैकग्राउंड हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बेसिस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बहुत शुरू से साइकोलॉजिकल थ्योरीज में, या जो भी हमारा सिस्टम रहा है बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए, अगर इसके रूट्स में अगर हम जा करके देखें, तो जो एक डार्विन का व्यू रहा है एवोल्यूशन को लेकर के, और जो एक हम कंटिन्यूटी मानते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस की एक कंटिन्यूटी है, वो इसका एक बहुत बेसिक अजम्पशन है जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं। और जब हम साइकोपैथोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक मॉडल को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एनिमल मॉडल। एनिमल मॉडल में बेसिक अगर आप इसको समझना चाहें तो वो ये बात होती है कि एनिमल्स का जो बिहेवियर है और जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर को लेकर के हुई है, हम उसको ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वही सेम प्रोसेस को हम यूज करते हैं जब हम साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। So the basic assumption in CBT is the principles derived from animal learning could be generalized to humans. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप सभी, हम लोग ने सबने पढ़ा भी है कि जो हमारे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हैं साइकोलॉजी के, वो सारे एनिमल्स पे हैं, स्पेशली जो हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं, और उसको ही हमने फिर एज इट इज ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करना शुरू करा, और ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बहुत बाद में ही साइकोलॉजी में आए। सो अगर हम बहुत ब्रीफली हम अगर सीबीटी के बारे में बात करें, तो इसमें दो तरीके के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक है जो विच आर लर्निंग थ्योरी बेस्ड, और दूसरा है जो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। उसको अगर हम एक थोड़ा सा बेसिक माने, तो उसकी भी बहुत सी चीज़ें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं। एक जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन सीबीटी का है, वो ये है कि हम एक ट्राइड मान करके चलते हैं कि अगर हमारा जो बिहेवियर है और हमारे जो कॉग्निशंस हैं, यानी जो हमारा थॉट प्रोसेस है और जो हमारी फिजियोलॉजी है, जिसमें अगर हम बात करें, सर आपने हाँ, क्या अपनी स्लाइड आगे बढ़ा दी है? हाँ, एक मैंने बढ़ा है, अभी नहीं हो रहा अच्छा है। सर, यहाँ पे बढ़ी हुई नहीं आ रही है। अच्छा, स्टूडेंट्स, ओके आप लोग को बढ़ी हुई दिख रही है? नो मैम। No, ma'am. ओके। शेयरिंग तो हो रहा है, आई थिंक शेयरिंग इज अब देयर। दिख रही है सर, अब दिख रही है। अच्छा, मैंने सॉरी वो फुल स्क्रीन करा था, तो शायद इस वजह से ना हो। ओके, सो इसमें जो एक ट्रायंगुलर वे में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, जो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारे बिहेवियर हैं, वो तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एंड दे आल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। और यही जो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस करने की जो बात है, जो हमारे थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस की है, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग और जो हम इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, यानी जो थेरेपेटिक एस्पेक्ट है, उसमें हम यूज करते हैं कि अगर हम बिहेवियर में चेंज ले आए, या हम आपके कॉग्निशंस में चेंज ले आए, तो आपके बिहेवियर को चेंज कर देता है, और वो चीज़ें आपके इमोशंस को भी चेंज कर सकता है। तो हम आगे भी थोड़ी सी उसकी बात करें। तो जैसे मैंने अभी इनिशियली कहा कि हम बात करते हैं कि जो हमारे कॉग्निशंस हैं और जो हमारा बिहेवियर है, हम उसको कैसे चेंज करके जो भी हमारे सिम्टम्स हैं किसी भी डिसऑर्डर को लेकर के, या जो हमारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है,
हम उसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं 3-4 स्लाइड्स में जो बातें कही उसको समराइज करूं, तो हमें ध्यान में रखना है कि सीबीटी का फोकस जो हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं, उससे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है बेसिस। दूसरा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है उसको हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम बात आगे करेंगे स्कीमास की और बाकी चीज़ों की, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कैसे अगर हम किसी एक चीज़ में चेंज लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम थॉट में चेंज लाते हैं, तो कैसे वो आपके बिहेवियर को और वो आपके इमोशंस को चेंज कर सकता है, या अगर आप अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाते हैं तो कैसे वो आपके थॉट्स में और आपके इमोशंस में चेंज ला सकता है। एक और जो बेसिक अजम्पशन है वो यही है कि जो जो भी हमारे प्रॉब्लमेटिक थॉट्स होते हैं या बिहेवियर हैं या फीलिंग्स हैं, वो दरअसल एक लर्न्ड बिहेवियर है। और जिस तरीके से हम नॉर्मल बिहेवियर, सो कॉल्ड नॉर्मल बिहेवियर को लर्न करते हैं, हम उसी प्रोसेस से सो कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर को भी लर्न करते हैं। बहुत ही कॉमन सा जो हमारा लर्निंग का प्रिंसिपल है, जिसको हम यूज करके, जो हमारा बिहेवियर थेरेपी है, जिसको बहुत ज्यादा जो सारा फोकस उसका इसी बात पे रहता है। तो लर्निंग प्रोसेसेस में अगर हम बात करें तो आप तब इस बात से अवेयर हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दो प्रकार के मेन लर्निंग थ्योरीज हैं, उसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कंडीशनिंग के बारे में या ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में या क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, उनके उनके जो हमारे लॉज हैं, उनके जो नियम हमारे हैं, उनको हम यूज करते हैं किसी भी डिसऑर्डर को समझने के लिए कि वो डिसऑर्डर कैसे किसी ने एक्वायर किया है, लर्न किया है या मेंटेन किया है, और इसी प्रिंसिपल्स को यूज करके हम कैसे उसके इस बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल लर्निंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पैवलोवियन कंडीशनिंग जो है, उसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे फियर है, उसको हम उसकी कंडीशनिंग हो सकती है। तो हम सब जैसे पैवलोव के एक्सपेरिमेंट्स को जानते हैं, जब उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक शॉक को या रेड लाइट को या इस तरह की चीज़ों को यूज करके हम उसकी उसकी कंडीशनिंग फेयर के साथ करा सकते हैं, और पर्सन को किसी भी चीज़ के साथ उसकी उन चीज़ों का फेयर हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, जिसमें थॉर्नडाइक, टॉलमैन या गथरी के जो उन्होंने जो नियम या रूल्स हमें लर्निंग के बारे में बताए हैं, उसको यूज करके भी हम इन बिहेवियर्स को समझ सकते हैं। सो इसमें फॉर एग्जांपल जो दो लॉ इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं कि इफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर वाज फॉलोड कंसिस्टेंटली बाय अ रिवॉर्ड, देन दैट बिहेवियर वाज मोर लाइकली टू अकर। ठीक है, तो जैसे जो रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल है कि जिस बिहेवियर को करने के बाद हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो वो बिहेवियर हमारे स्ट्रांग होते जाते हैं। तो साइकोपैथोलॉजी के लर्निंग में और एक न्यू बिहेवियर के लर्निंग में इस प्रिंसिपल को भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी में अगर हम आगे देखें तो थोड़ी सी बात रीइंफोर्समेंट्स की भी समझना जरूरी है लर्निंग प्रिंसिपल्स के टर्म में, क्योंकि आपको ये डेवलपमेंट भी ध्यान में रखना है जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को समझते हैं, कि कैसे स्टार्टिंग तो है हमारी इन बिहेवियरल प्रिंसिपल से, बिहेवियर लर्निंग थ्योरी से हमारी स्टार्टिंग है, लेकिन जब इससे लोग डिससेटिस्फाइड हुए तो कैसे जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसको कंबाइन करके लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात की। तो इसी में अगर आ गया है कि बिहेवियर विच इज फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज will tend to be repeated, and behavior which is followed by unpleasant consequences will occur less frequently. तो हम इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं किसी पर्सन को नया बिहेवियर सिखाने के लिए, या जो ऑलरेडी उसका एक स्ट्रॉन्ग लर्न्ड बिहेवियर है उसकी अनलर्निंग कैसे हो सकती है, उसको यूज हम कर सकते हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो स्किनर ने भी जब हमारे रीइंफोर्समेंट्स की बात करी है, तो उन्होंने रीइंफोर्सर्स को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट दे हैव ऑन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। वो सिर्फ रिवॉर्ड के टर्म्स में या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के टर्म्स में रीइंफोर्सर्स की बात नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वो ये बात करते हैं कि उसका इफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर पे किस तरीके से होता है, दैट विल डिटरमाइन की रीइंफोर्समेंट जो है वो किस तरीके का है।
इसमें जो दो बहुत वेल नोन तरीके के रीइंफोर्सर्स हैं, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उस चीजों से रिलेटेड है कि इफ बिहेवियर अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इट इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और इंक्रीज इन बिहेवियर। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात लर्निंग के टर्म्स में करते हैं, तो इन दोनों का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो एंड रिजल्ट है, वो होता है देयर इज अ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ द बिहेवियर। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में है ए फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर इंक्रीजेस बिकॉज इट इज फॉलोड बाय द ओमिशन ऑफ एन एंटिसिपेटेड एवर्सिव बिहेवियर। तो अगर आप लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन मोटे तौर पे याद रखिए कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं, इसमें जो हमारा बिहेवियर है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। उसी तरीके से हम पनिशमेंट की बात करते हैं, जो कि लर्निंग में हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो इसका जो बेसिक फंडा आपको ध्यान रखना है कि बिहेवियर डिक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज फॉलोड बाय एन एवर्सिव इवेंट। तो जहां पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में देयर इज एन इंक्रीज इन बिहेवियर फ्रीक्वेंसी, पनिशमेंट में देयर इज अ डिक्रीज इन द बिहेवियर फ्रीक्वेंसी। तो कई बार ये डिफरेंस हम थोड़ा सा नहीं क्लियर कर पाते, तो इसको आप हमेशा इस तरीके से ध्यान में रखिए। तो जो चौथी चीज है वो है फ्रस्ट्रेटेड नॉन रिवॉर्ड, और इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द बिहेवियर डिक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज फॉलोड बाय ओमिशन ऑफ एन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। तो अगर कोई रिवॉर्ड जो एक्सपेक्ट करता है उसे हटा दिया जाए तो भी उसका बिहेवियर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज होता है, और पनिशमेंट या फ्रस्ट्रेटिव नॉन रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसके वजह से जो है हमारा बिहेवियर, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो लर्निंग प्रिंसिपल्स में ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम बिहेवियर एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं या बिहेवियर उसमें हमें कोई चेंज लाना है। उसी से अगेन उसी को थोड़ा सा और अगर हम इलैबोरेट करें तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक antecedent conditions and or specific consequences that follow problematic behavior। तो जो अभी हम लोग reinforcement की बात करी, ये उसी टर्म्स में है। और अगर हम इसी लर्निंग प्रोसेस को और जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट अगर इसका देखें, अगर हम ध्यान में रखें, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि हमारी लर्निंग किस तरीके की है, और जो जिसको हम प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर मान के चल रहे हैं या जो हमने अभी तक सीखा है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये आपके डेवलपमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी चाइल्डहुड हिस्ट्री कैसी रही, चाइल्डहुड में आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसमें आपको कैसा मिलता रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसा मिल रहा है आपको, या पनिशमेंट आपको किस तरीके से मिले हैं। तो हम बात तो वैसे कर रहे हैं कि ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, लेकिन इस बिहेवियरल एस्पेक्ट में भी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड्स में हल्का सा जिक्र किया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का, तो उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये जो कॉग्निटिव इनपुट है, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा समझ में आए। इसी सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे, और बहुत सी बुक्स में इसका रेफरेंस मिलता है, मॉरोर ने वर्क किया था एन्यूरेसिस पे। एन्यूरेसिस होता है बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, खास करके बच्चों में, और अडल्ट्स में भी होती है बहुत ओल्ड एज में अगर हम आते हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था और उसका एक बिहेवियरल मैनेजमेंट का एक प्लान बनाया था, जिसको हम बेल एंड पैड के नाम से साइकोलॉजी में बहुत इस तरीके से जानते हैं। तो इन्होंने भी इसी कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके इस टेक्निक को यूज किया था कि हम बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं और इस एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम को डील कराएं।
इस तरीके से थोड़ा सा और अगर हम 50s में आते हैं तो जोसेफ वॉल्क ने एक रेसिप्रोकल इनिबिशन की एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बिहेवियरल एस्पेक्ट को इंक्लूड करा। और उन्होंने रेसिप्रोकल इनिबिशन में ये बात कही कि दो चीजें जो हैं, जो अगर एंटागोनिस्टिक हो, अपोजिट हो, तो वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और इस प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं किसी भी पर्सन में नए बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, या कोई उसका जो ओल्ड बिहेवियर है जो कि प्रॉब्लमेटिक है उसमें चेंज लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एंजाइटी है किसी चीज को लेकर के, तो एंजाइटी में वो बहुत ज्यादा परेशान है या बहुत ज्यादा उसका अराउजल है, और हम एक बिहेवियर लें, ईटिंग बिहेवियर, खाने का व्यवहार। तो जो ईटिंग बिहेवियर है या जो चीज आपको खाने में पसंद है, वो एक बहुत सूदिंग इफेक्ट आप में लाता है। तो अगर हम इन दो प्रोसेसेस को कंबाइन कर दें, तो इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि एक ही कोई प्रोसेस जो है वो ऑपरेट करेगी। आइदर यू विल बी एंग्शियस और यू विल बी रिलैक्स्ड। तो इस प्रोसेस को उन्होंने कहा रेसिप्रोकल इनिबिशन, कि वो एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। और इसी को आगे जाकर के बहुत रिफाइंड वे में जो हम एक टेक्निक के रूप में देखते हैं, वो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। जब हम सीबीटी में हम मान लीजिए किसी फियर प्रोवोकिंग चीज़ों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को क्लोज प्लेसेस से डर लगता है, तो हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और इसी जो रेसिप्रोकल इनिबिशन की जो थ्योरी वॉल्क ने दी थी, उसी को और रिफाइन करके उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको यूज करके हम आगे कर सकते हैं। इसी 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 कड़ी में अगर आप देखें तो आप लोगों ने टोकन इकोनॉमी का नाम सुना होगा। तो जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स की बात करते हैं, तो उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है या जो हम यूज करते हैं, वो टोकन इकोनॉमी के टर्म्स में। टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल जो है वो शुरू में इंस्टीट्यूशनलाइज पेशेंट्स जो थे, जो कि सिजोफ्रेनिक बीमारी से ग्रसित थे या जिनमें सिजोफ्रेनिक बीमारियां थी, और उनके जो बिहेवियरल डेफिसिट्स हो गए थे, डेफिसिट्स मतलब कि वो बिहेवियर में बहुत सारी कमी आ जाती है जब हम सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं, तो हमें उन्हें नए बिहेवियर्स को सिखाना पड़ता है। तो टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल होता है कि अगर किसी ने कोई जो बिहेवियर हम सिखाना चाहते हैं और वो बिहेवियर करके हमें दिखाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और उनको उसके लिए एक टोकन दिया जाता है। और जब वो एक नंबर ऑफ टोकन्स इकट्ठा कर लेते हैं अपने पॉजिटिव बिहेवियर को शो करके, तो उससे वो खाने पीने की चीज़ों को या अपने इंटरेस्ट की चीज़ों से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो उस पे अभी तक हम लोग का फोकस जो है वो सिर्फ सिंपली बिहेवियरल चीजों पे है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 60s और 70s का भी जब समय आया, तो बहुत से लोगों ने बिहेवियरल थेरेपी को क्रिटिसाइज करना भी शुरू किया कि ये सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें और भी चीजों की आवश्यकता है अगर हमें बिहेवियर को समझना है या हमें बिहेवियर में किसी प्रकार का चेंज लाना है। तो इसी इसी सीक्वेंस में रैचमैन एंड लैंग ने एक फिक्स्ड सिस्टम अप्रोच दिया था, जो कि उस समय बिहेवियरल जो अप्रोच था उससे अलग था थोड़ा। और उन्होंने एक तरीके से शुरुआत रखी थी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को लेकर। और उन्होंने जो जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंसेप्चुअलाइज करा 3 टर्म्स में: बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को समझना है तो उससे बिहेवियरल एस्पेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आपको उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उसका अफेक्टिव एस्पेक्ट भी समझना पड़ेगा, और उसके साथ जो उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें भी समझना। तो ये एक बड़ा ही डिफाइनिंग मूवमेंट रहा है जब हम सीबीटी के डेवलपमेंट के बारे में बात। उसी तरीके से लेज़ारस का नाम हम सब जानते हैं साइकोलॉजी में। तो लेज़ारस ने भी जो हमारे बिहेवियरल थेरेपी के जो बहुत मैकेनिकल प्रिंसिपल्स थे कि हम कंडीशनिंग के रूल्स को इस्तेमाल करके हम बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, उन्होंने भी इस अप्रोच को काफी क्रिटिसाइज किया। और अगर हम इन्हीं चीजों को साइकोलॉजिकल थ्योरीज के डेवलपमेंट के रूप में देखें,
तो बिहेवियर थेरेपी का डेवलपमेंट या बिहेवियर थ्योरी का डेवलपमेंट जो था वो बेसिकली साइको एनालिसिस के अपोजिशन में हुआ, क्योंकि साइको एनालिसिस बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करता था जिसको कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बिहेवियर थेरेपिस्ट ने ये कहा था, थ्योरीज ने ये कहा था कि हम उन चीजों को जिनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनको हम स्टडी कैसे कर सकते। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बिहेवियरल अप्रोच रहा उसको लेकर के भी बहुत सारी यही प्रॉब्लम्स हुई। तो जो एक सबसे बड़ा नाम जो कॉग्निटिव अप्रोच में जिसको हम थ्योरी के रूप में और थेरेपी के रूप में पढ़ते हैं वो एरन बेक का था। अगर आप बेक के बारे में अगर आप उनकी चीज़ों को जब आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं तो उन्होंने जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर बहुत फोकस किया कि ये हमारे एबनॉर्मल या नॉर्मल बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं या उनको उनके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसी सीक्वेंस पे उन्होंने कुछ बात करी है कि अगर हम साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो ये दरअसल हमारे जो डिस्टॉर्टेड बिलीव्स होते हैं, जो हमारे सोचने का तरीका है जिसमें कुछ प्रकार के मैल एडेप्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो इन चीजों को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एरन बैक के बारे में अगर आप देखें तो एरन बैक की जो बेसिक ट्रेनिंग थी दैट वाज इन साइकोएनालिसिस। वो साइकोएनालिटिकली ट्रेन्ड थे और उन्होंने जब अपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि साइको एनालिसिस में खास करके जैसे फ्री एसोसिएशन जैसी जो टेक्निक्स थी उसमें बहुत सी चीजें मिस आउट होती हैं। और एरन बेक ने फिर अपनी थ्योरीज को डेवलप करना शुरू करा और जो जो उन्होंने थ्योरी जो डेवलप करी और जिसकी वजह से हम जानते हैं उसका फोकस उनका डिप्रेशन के ऊपर। और उनकी एक बुक है उसका नाम है डिप्रेशन क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। उसमें इन्होंने अपने इन आइडियाज को बहुत ही डिटेल में शेयर किया वर्ल्ड के साथ कि किस तरीके से जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो जो हमारे हमारे बिलीव्स हैं, हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, वो किस तरीके से इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी इस बुक में उन्होंने फोकस किया कि हम डिप्रेशन जैसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेक का बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी में जो हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो अगर आप डिप्रेशन को हम दो तरीके से नॉर्मली देख करके चलते हैं। एक जहाँ पे बायोलॉजिकल इनपुट डिप्रेशन में ज्यादा है और एक वो डिप्रेशन जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो बेक ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा अलग करके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे और जो डिप्रेशन उससे जनरेट होता है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने फिर उसी में जो जो इनकी ट्रायड है कि नेगेटिव व्यू अबाउट द सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर के बारे में उन्होंने बात किया। तो वहां पे वो उस एलिमेंट्स को लेके आए जो कि इंसान के अंदर चलता है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट बात करते हैं कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें बाहर, लेकिन क्योंकि बेक साइकोएनालिटिकल ओरिएंटेशन में ट्रेन थे तो उनका उनका जो ओरिएंटेशन था वो इनवर्ट्स था। तो शायद ये भी एक रीजन रहा कि उन्होंने इसी चीज को फोकस करके रिफाइंड करके अपने तरीके से पेश किया है। और उन्होंने जब फ्री एसोसिएशन टेक्निक को इस्तेमाल किया था तो उन्होंने पाया कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो फ्री एसोसिएशन में भी बहुत सी चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, बट वो उन चीजों को बताते हैं, बट वो अवेयर नहीं है उन चीजों के बारे में। तो ये उनके लिए एक बड़ा पजलिंग था कि फ्री एसोसिएशन में जो चीजें बता रहे हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं। और उन्होंने पाया कि दीज थॉट्स दे अपीयर वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत ऑटोमेटिक होते हैं और उस पर सब्जेक्ट का बहुत कंट्रोल नहीं होता। और इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया था ऑटोमेटिक थॉट्स।
तो जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी पे बात करते हैं तो ऑटोमेटिक थॉट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप उसका लिंकेज समझें तो उसका लिंकेज जो बेक का जो साइकोएनालिटिकल ओरिएंटेशन था उसी से है, और उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि ऑटोमेटिक थॉट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि जो ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ये हमेशा अनप्लेजेंट फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और उन्होंने कहा कि एक सबसे बढ़िया तरीका है ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानने का कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन योर फीलिंग, नेगेटिव जब भी फीलिंग्स आती हैं तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए, देन ओनली आप बहुत आसानी से अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ऑटोमेटिक थॉट्स की जो इसमें आई। फिर उन्होंने एक और जो कंसेप्ट दिया कॉग्निटिव थ्योरी में, वो है स्कीमास को लेकर के। द वर्ड इज स्कीमा। स्कीमा को इन्होंने कहा कि हम सारे इंडिविजुअल्स का एक सेट ऑफ बिलीफ होता है, हमारे अपने कुछ रूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, और हम अपने एक्सपीरियंसेस को इन्हीं स्कीमास के लेंस में इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम सीबीटी में बात करें तो स्कीमास को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीमास ही बताते हैं कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एक बड़े कॉमन भाषा में हम बात करते हैं कि अगर आपको आधा ग्लास पानी का भरा हुआ दिया जाए तो आप उसको आधा भरा देखेंगे कि आधा खाली देखेंगे। तो कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि आपके स्कीमास जो बने हुए हैं, आपके जो बिलीफ्स बने हुए हैं, ये आपको हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इंटरप्रेट करने। तो कॉग्निटिव थ्योरीज में स्कीमास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम थोड़ा सा और कॉग्निटिव थ्योरी में थोड़ा सा पीछे अगर हम जा करके देखें तो ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बेक ने ही सबसे ज्यादा बात करी है, उन्होंने सबसे पहले बात करी। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बेक से पहले एल्बर्ट एलिस ने भी बिलीफ्स के बारे में बात करी, इन्हीं थॉट्स के बारे में बात करी, एडलर ने इसके बारे में बात करी। या अगर हम पर्सनालिटी थ्योरीज के टर्म्स में अगर आप देखें तो जॉर्ज केले एक साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी एक पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है साइकोलॉजी में, जिसमें वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमारा जो अपना देखने का नज़रिया है वो कैसे बनता है और कैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा जीन पियाजे ने बात करी है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन के। हम सब जानते हैं कि बच्चों के ऊपर जो उनका वर्क है, तो बेक से पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात करी, लेकिन बेक ने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाकी लोगों से अलग रखी है या जिसने एक थ्योरी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करा है, वो था जो ये ऑटोमेटिक थॉट्स। अगर हम सीबीटी का अगर हम बात करें तो सीबीटी में सबसे इम्पोर्टेंस या जो एक इनिशियल चीज होती है जिस पर वर्क किया जाता है वो है ये ऑटोमेटिक थॉट्स, क्योंकि इन्हीं ऑटोमेटिक थॉट से ही हम आगे की चीजों पे वर्क करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी को भी थोड़ा सा समझें कि वो हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करता है, तो कॉग्निटिव थ्योरी बात करती है अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमारी थिंकिंग किस तरीके की है और उस थिंकिंग का इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे किस प्रकार का होगा। और कॉग्निटिव थ्योरी जो साइकोपैथोलॉजी को है वो दरअसल बात करती है इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कि हमारा जो सोचने का तरीका है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस आते हैं, हमारा सोचने का तरीका एक पर्टिकुलर टाइप में आ जाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे साइकोपैथोलॉजी या बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप होती हैं। और इसी प्रोसेस में उन्होंने कहा कि जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स दरअसल ऐसे थॉट्स हैं जो जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में होते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके मन में आते हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ये डिस्टॉर्टेड होते हैं, ये आपको क्लियर पिक्चर नहीं देते हैं, ये आपको एक प्रकार का बायस्ड पिक्चर देते हैं
जो कि आपके स्कीमा से या आपके कोर बिलीफ से जुड़ा होता है। कोर बिलीफ पे भी अभी मैं आगे आऊंगा थोड़ा सा इसमें। और ये इसका जो प्रोग्रेस है वो डेवलपमेंटल होता है। डेवलपमेंटल का मीन्स है कि इनका डेवलपमेंट हमारे चाइल्डहुड से होता है। तो जैसे जैसे आप सीखते हैं, बड़े होते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को सीखते जाते हैं, वो रीइंफोर्स्ड होते हैं। रीइंफोर्स्ड होने की वजह से वो बहुत स्ट्रांग बनते जाते हैं, और फिर एक वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो इतने ज़्यादा आपके शरीर के अंदर आ जाते हैं कि आपको उसके बारे में कॉन्शियस रूप में पता भी नहीं होता है। इसीलिए उसका जो नेचर है वो बहुत ऑटोमेटिक तरीके का हो। ऑटोमेटिक को आप ऐसे भी समझे कि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपके आंखों की तरफ कोई चीज बहुत तेजी से आए, तो एक हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, चाहे अपना सिर हिला लें या अपने हाथ से हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करें। तो ऑटोमेटिक थॉट्स भी एक प्रकार के इसी तरीके से रिफ्लेक्स टाइप के हो जाते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं तो वो ऑटोमेटिक थॉट अचानक आपके मन में आ जाता है। और ये जो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, यही आपका एक वर्ल्ड व्यू आपको देता है कि आप अपनी दुनिया को कैसे देखेंगे। तो अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में भी बात करें तो सीबीटी इस बात पर फोकस करता है कि बच्चों का अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होंगे तो आगे चल करके उनमें साइकोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि वो उनके वर्ल्ड व्यू को फॉर्म कर रहा है, उनके बिलीफ्स को फॉर्म कर रहा है, उनके स्कीमास को फॉर्म कर रहा है। इसलिए डेवलपमेंट जो नेगेटिव हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बिहेवियर को समझने के लिए। चाहे वो हम एंटी सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, या हम खास करके अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस किस प्रकार के हैं, क्योंकि वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्कीमास के बारे में बताएगा कि जो उसके स्कीमास बने हैं, दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वो अडेप्टिव बना है या मैल अडेप्टिव बना हुआ है। ठीक है, सो ये चीज बड़ी इसमें आगे चल के इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो मैल अडेप्टिव स्कीमास हैं, वो हमारे डिफरेंट जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हैं या एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, खास करके जो अर्ली एज में हैं, या जो हमारे फ्रस्ट्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट नीड्स अगर होते जाते हैं, तो वो हमारे इन मैल अडेप्टिव स्कीमास को बनाते हैं। इसको अगर आप बहुत ही नॉर्मल सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें, तो अगर थोड़ा सा मैं पोएटिक होकर के कहूँ तो एक पुराने शायर हैं साहिर लुधियानवी, उनका एक सॉन्ग है, और उस सॉन्ग में एक लाइन है कि देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे और जिस तरीके के हम चीज़ों को सीखेंगे, दरअसल हम वही चीज़ फिर सोसाइटी में वापस करते हैं। तो मैलअडैप्टिव स्कीमास को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी स्कीमास के बारे में जो बात करी, तो यही स्कीमास में फिर हम मोटे तौर पर जिनको हम स्कीमास कह रहे हैं, इसमें एक चीज आती है, इसको हम कहते हैं कोर बिलीफ। सीबीटी में कोर बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर बिलीफ दरअसल इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, बिलीफ्स हैं हमारी, जो कि हमारे अपने सेल्फ के बारे में है, और जो हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स लोग हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, और फ्यूचर के बारे में हमारा क्या ओरिएंटेशन है, ये इस कोर बिलीफ का मटेरियल होता है। और ये कोर बिलीफ ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से, या जो समय बीतता जाता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस कोर बिलीफ की है कि ये इस कोर बिलीफ को हम वर्बलाइज बहुत इजीली नहीं कर पाते, और हम इसको एकदम ट्रू मान करके चलते। जैसे हम लोग कई बार कई लोगों के बारे में जब ओपिनियन देते हैं, तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि वो इसी तरीके का है, क्योंकि हमने हमारा वो कोर बिलीफ उस चीज के बारे में, या उस पर्सन के बारे में, या उस सिचुएशन के बारे में इतना स्ट्रांग है कि हम उसको एकदम ट्रुथ मान करके चलते हैं। तो सीबीटी में इस कोर बिलीफ को समझना बहुत जरूरी है अगर आप किसी पर्सन की साइकोपैथोलॉजी को समझना चाहते हैं।
ये कुछ डोमेन्स हैं स्कीमास के बारे में, मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, प्रॉब्ली इतना रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो जब हम इस तरीके के कोर बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस सीबीटी में क्या होती है कि ये कोर बिलीफ्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं। तो आपका जिस प्रकार का कोर बिलीफ होगा, जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो आपका जो रिएक्शन होता है उस सिचुएशन में, उस कोर बिलीफ से ही गवर्न्ड होता है। तो अगर वो मैल अडेप्टिव है और उसको चेंज करना है, तो हमको उस कोर बिलीफ को समझना होता है कि आपका वो कोर बिलीफ क्या है। इस कोर बिलीफ को जानने का जो तरीका है या पहचानने का कि हमारे कोर बिलीफ्स क्या हैं, जैसे अब थोड़ा सा एडवांस्ड अगर आप जब इस चीज को पढ़ते हैं तो बहुत सारे कोर बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये नेगेटिव होते हैं जो हमारे मैलअडैप्टिव बिहेवियर से जुड़े हुए होते हैं। तो एक टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम आप ध्यान में रखिए, जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड्स एरो टेक्निक। डाउनवर्ड्स एरो टेक्निक एक प्रकार की क्वेश्चनिंग टेक्निक है, जो अभी हम लोग ने ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में बात करी थी। जब आप पर्सन के ऑटोमेटिक थॉट्स को जानते हैं तो आप उसकी फर्दर प्रोबिंग करते हैं, जो वो रिस्पॉन्सेस देते हैं उसकी फर्दर प्रोबिंग होती है, और आप एक उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं फर्दर प्रोबिंग करते हुए, जो कि आपको बताता है कि ये इसका कोर बिलीफ है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका जो एस्पेक्ट होता है ये है कि आप लर्न करें कि कैसे आप उसकी प्रोबिंग कर सकते हैं, कैसे आप उससे सवाल पूछ सकते हैं उसके उस कोर बिलीफ तक पहुंचने। ये जो कोर बिलीफ है, ये भी एक और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। जैसे मैंने कहा कि कोर बिलीफ आपको सोचने का नजरिया देता है जो बड़ा स्ट्रांग होता है, और ये कोर बिलीफ बहुत ही सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है। और क्योंकि ये सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है, इस कोर बिलीफ को चेंज कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि जब सेलेक्टिव फोकस होता है तो हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या हमारे बिलीफ से मेल खाते हैं, और जो मेल नहीं खाते हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। इस कोर बिलीफ के बाद एक और नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट बिलीफ्स। इंटरमीडिएट बिलीफ्स में एक चीज होती है, उसको कहते हैं कंडीशनल अजम्पशंस। कि कोर बिलीफ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनचेंज्ड होने वाली चीज है जिसके बारे में आप आर्टिकुलेशन नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं। लेकिन कंडीशनल अजम्पशंस उस तरह की चीजें हैं जिसको कि आप पहचान जाते हैं, बोलते भी हैं, बता भी सकते हैं, और इसका नेचर होता है कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा। यानी चीजों को देखने का जो नजरिया है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ A will happen, then B will happen, ये आपकी सोच में फिक्स्ड हो जाता है। तो जैसे जब हम बहुत अपने बिहेवियर में रिजिड होते हैं और हम ये बार बार कहते हैं कि अगर ये ऐसा करेगा तभी मैं ऐसा करूंगा, हम उस फर्स्ट कंडीशन के पूरे होने पे ही सेकंड कंडीशन पाने को तैयार होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हमें बताती हैं कि आपका जो कंडीशनल अजम्पशंस हैं वो किस प्रकार के। तो कोर बिलीफ के बाद इंटरमीडिएट बिलीफ को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सीबीटी में हम बात करते हैं, और इस इंटरमीडिएट बिलीफ्स के बाद ही हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो इस ऑटोमेटिक थॉट से अजम्पशंस की तरफ जाता है और अजम्पशन से कोर बिलीफ की तरफ। तो कोर बिलीफ को समझने के लिए, अजम्पशंस को समझने के लिए बेक कहते हैं कि आपको इस ऑटोमेटिक थॉट्स को समझना जरूरी है कि ये क्यों आ रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। इसी में अगर हम बात करें, जो कॉग्निटिव थ्योरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं हमारे सोचने समझने में कुछ एरर्स, जिसको हम कॉग्निटिव एरर्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है, जो भी जानकारी हमें अपने वातावरण से मिलती है उसमें वो किस तरीके से इनएक्यूरेसीज लाते हैं। तो बेक का कहना है कि अगर इस ऑटोमेटिक थॉट को आपको बदलना है, जिसके द्वारा आप अजम्पशंस को चेंज कर सकते हैं, कोर बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, तो आपको इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझना पड़ेगा, जिसको कि आप ऑटोमेटिक थॉट्स के थ्रू ही समझ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बात करी है कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शन है, दैट इज ऑल और नॉन थिंकिंग। ऑल और नॉन थिंकिंग है जिसको हम डाइकोटोमस थिंकिंग भी कहते हैं, कि अगर मेरे नंबर आएंगे एग्जाम्स में तो बहुत बढ़िया आएंगे, नहीं आए तो इसका मतलब है कि मैं फेल कर गया। कोई भी बीच का स्कोप नहीं है, ठीक है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में देखते हैं। इसको दोबारा अगर आपको याद रखना हो तो आपको मैं एक मैं इसमें शेर सुनाता हूँ, तो आपको वो चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेंगी। एक शेर है, वो ये कहता है कि और इसको आप डेवलपमेंटल प्रोसेस के रूप में भी देख सकते हैं कि दिल भी अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो इसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हम बच्चों की थिंकिंग की बात करें तो वो इसमें प्रिडोमिनेंट होती है, वो बीच की चीजों पे समझौता नहीं करते। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एग्जांपल है। फिर उसी तरीके से एक सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन एक और डिस्टॉर्शन होता है। इसमें हम बहुत सी ऐसी आइडियाज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी नेगेटिव थॉट से मेल खाता है, और जो पॉजिटिव चीजें होंगी उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम अपने अप्रोच में बड़े सेलेक्टिव होते हैं। तो ये भी एक डिस्टॉर्शन है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। फिर एक है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग ये है कि मुझे मालूम है उसके मन में क्या चल रहा है। खास करके अगर हम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स की बात करें या हम डिप्रेसिव एपिसोड्स की बात करें और उसमें जो लोगों की बात होती है, तो हम इस बात को बहुत फोकस करते हैं। हम चीजों को समझने की जगह हम इस माइंड रीडिंग जो डिस्टॉर्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मुझे पता है अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई बात करी है या मेरे मन की बात नहीं करी है तो उसके मन में क्या चल रहा है, आई नो द रीजन। तो ये एक प्रकार का डिस्टॉर्शन होता है जो कि आपके मैल अडेप्टिव बिहेवियर को शो भी करता है। फिर इसी तरीके से है नेगेटिव प्रेडिक्शन। नेगेटिव प्रेडिक्शन भी एक डिस्टॉर्शन है। अच्छा, इस डिस्टॉर्शन की बात मैं इसलिए भी फोकस कर रहा हूँ कि जब हम अलग अलग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिप्रेशन की बात करें या हम ओसीडी की बात करें, तो ये डिस्टॉर्शंस बहुत ही कॉमन होते हैं और ये ट्रीटमेंट का पार्ट भी होता है कि आप इन डिस्टॉर्शंस को फाइंड आउट कर सकें कि किसी पर्सन के क्या मेजर डिस्टॉर्शंस हैं। वैसी है लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग। ठीक है, कि अपने अपने बारे में कोई नेगेटिव व्यू है उसको आपने क्रिएट कर रखा है। आपने वो क्रिएट कर लिया और आप मानते हैं कि नहीं, ये जो मैं कह रहा हूं अपने बारे में वही चीज जो है वो ठीक है। वो सही गलत से मतलब नहीं है, जो भी आपने बना लिया है अपने लिए लेवल कि फॉर एग्जांपल कि मैं लूजर हूं, मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं हूं, जबकि हो सकता है कि जो एग्जांपल्स हैं या जो लोग हैं उनकी ओपिनियन आपके बारे में डिफरेंट है। जैसे डिप्रेस्ड लोग जब होते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार का फेलियर मिलता है तो वो कहते हैं कि मैं तो एक फेलियर पर्सन ही हूँ। वो उस इवेंट को नहीं देख रहे हैं कि वो एक इवेंट है जिसमें उसने जो सक्सेसफुली नहीं कर पाया है, वो एज अ पर्सन ही अपने आप को लेबल करने लगते हैं कि मैं जो है फेलियर। तो ऐसी ये दो तीन और चीजें हैं, मैग्निफिकेशन है, मिनिमाइजेशन है। इसमें हम अपने इम्परफेक्शंस को कई लोग बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं और जो अपने गुड पॉइंट्स होते हैं हम उनको मिनिमाइज करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरी है। मॉडेस्टी जो अंग्रेजी का शब्द है, कि मॉडेस्ट होना एक अलग बात है, लेकिन एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के रूप में अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको बहुत लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। फिर वैसी है ओवर जनरलाइजेशन, जहाँ पे हम एक किसी नेगेटिव इवेंट को लेकर के हर चीज को नेगेटिव पिक्चर पेंट करने लगते हैं। तो ये इस तरीके के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझना जरूरी है अगर हम बात करते हैं सीबीटी। और ये एक सिस्टमैटिक डायग्राम है जिसमें इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये अर्ली लाइफ स्ट्रेसेस के बारे में है, या जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ये आपके फॉर्म करते हैं स्कीमास को। और इस स्कीमा में आपके ये कोर बिलीव्स हैं, ये अजम्पशंस होते हैं। और जब भी कोई ट्रिगर आता है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, वो आपके इन कोर बिलीव्स को या इन अजम्पशंस को ट्रिगर करते हैं।
कोई सिचुएशन हो सकती है, और वो ट्रिगर होने के बाद वो ऑटोमेटिक थॉट्स उस सिचुएशन में आपको आने लगते हैं। और ये, और जब ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो इमोशनल लेवल पे हो सकता है, वो बिहेवियरल लेवल पे हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है, और फिर ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसको इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम कहते हैं कि कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है प्रॉब्लम का। तो कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन होता है कि आप इन सारे चीजों को कैसे लिंक कर सकते हैं कि उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री में क्या हुआ है, उसके उसके कोर बिलीफ्स किस तरीके के हैं, उसके अजम्पशंस किस तरीके के हैं, उसके ऑटोमेटिक थॉट्स किस तरीके के हैं, और वो कैसे उसके बिहेवियर में, उसके थॉट में और उसके इमोशंस में, उसके फिजियोलॉजी में वो कैसे एक्सप्रेस होता है। क्योंकि इंटरवेंशन फिर आप उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आप उसके ऑटोमेटिक थॉट्स को चेंज करें, उसके अजम्पशंस को चेंज करें, और लास्ट में उसके कोर बिलीफ्स को चेंज करें। कोर बिलीफ्स को चेंज कर पाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम स्टार्ट करते हैं इस ऑटोमेटिक थॉट से या बिहेवियर से या उसकी जो फिजियोलॉजी, वो रिवर्स साइकिल को लेकर के हम चलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक तरीका है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझने के लिए। इसी को जैसे अगर आप सीबीटी के टर्म्स में किसी को समझना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर थोड़ा सा हम एक कुछ स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। वो स्टेप कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि आप सबसे पहले बात करें उसकी करंट प्रॉब्लम्स को लेकर, कि उसकी करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट है कि इसकी इस प्रॉब्लम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो उसमें आप उसकी कुछ चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी जो ट्रिगरिंग इंसिडेंट्स थे उसके बारे में बात कर सकते हैं, या जो इम्पोर्टेंट उसके लाइफ के इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो स्ट्रेसफुल हैं या कोई चेंज है, उसको समझना आपको जरूरी। फिर साइकोपैथोलॉजी में एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि कोई पर्सन का बिहेवियर मेंटेन कैसे होता है, क्योंकि सीबीटी में इस बात पे बहुत फोकस है कि आदमी का पर्टिकुलर बिहेवियर मेंटेन कैसे है हो रहा है। क्योंकि जब तक आप उस मेंटेनेंस के प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसको ब्रेक करने के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि जब भी आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो उसका मेंटेनेंस एस्पेक्ट ज्यादा हावी होगा और वो अपने उसी बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा। फिर जैसे हम साइको एनालिसिस में करते हैं कि कैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस आपके आज की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बेक का ट्रेनिंग साइको एनालिसिस में था, तो उन्होंने भी इस बात पे फोकस किया कि अर्ली लर्निंग जो हमारी होती है, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वो कैसे हमारे आज के प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमें एक बैकवर्ड लिंकेज खोजने की जरूरत होती है। यहाँ पे अनकॉन्शियस जैसी चीज के बारे में हम बात नहीं करते हैं, बट एक कॉन्शियस अटेम्प्ट होता है पास्ट हिस्ट्री और करंट प्रॉब्लम को रिलेट करने। इसी प्रोसेस में हम बात करते हैं कि उसके अंडरलाइंग बिलीव्स किस तरीके के हैं, उसके थॉट्स किस तरीके के हैं, उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म्स किस तरीके के हैं, और उसका वर्ल्ड व्यू किस तरीके का है। ये सब चीजें आप इंटरव्यू के दौरान उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जानकारी को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि देखिए हर पर्सन का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। आज तक वो ठीक है लेकिन कल से अचानक उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो हमें उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस को, उन ट्रिगर्स को समझना जरूरी होता है जो उसके मैल एडेप्टिव बिहेवियर को एलिसिट कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपको इंटरवेंशन को किस लेवल पे और किस तरीके से स्टार्ट करना। ये अभी पास्ट में मैंने डिस्कस ही किया ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में, तो इसको भी थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स को स्लिप कर रहा हूं। अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम भी कम है, मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लूं कि अगर आप इतना सारी चीजों को डेवलप कर लेते हैं, आपके पास ऑटोमेटिक थॉट्स के रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास उसके बिहेवियरल पैटर्न्स के रिकॉर्ड्स हैं, आप कोर बिलीफ को जानते हैं, आप उसके बाकी चीज़ों को जानते हैं,
तो हम बात कर सकते हैं कि इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज किस तरीके की होती है। तो जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में बात करी है, बिहेवियरल चीज़ों से स्टार्ट करी है और फिर हम कॉग्निटिव पे आए हैं, तो स्ट्रैटेजीज को भी हम दो तरीकों से डिवाइड करके देख सकते हैं। एक कुछ होता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज, और एक है जो है हमारी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी। तो बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज में हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की या थॉट स्टॉपिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल थॉट स्टॉप का इस्तेमाल जो है, मान लीजिए आप सिगरेट सीजेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो पहले इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता था थॉट स्टॉपिंग को लेकर के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। टाइम आउट एक स्ट्रैटेजी होती जहाँ पे हम पर्सन को इनकरेज कर सकते हैं कि अपने आप को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए दूर कर लें। जैसे अगर आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये होता है कि भाई इनको अलग रखो, थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। तो वो भी एक प्रकार की बिहेवियरल स्ट्रैटेजी होती है टाइम आउट की, कि आपको उस सिचुएशन से बाहर कर दिया जाए। फिर एक रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियरल टेक्निक है, जहाँ पे आप पर्सन को रिलैक्स करना सिखा सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। JPMR जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर अप्लाइड रिलैक्सेशन है, जिसमें हम बहुत कम टाइम में रिलैक्स हो सकते हैं। उसी तरीके से इमेजरी एक टेक्निक है, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक है। उसमें हम इमेजिन करने को सब्जेक्ट को कहते हैं, हम एक्चुअल सिचुएशन में ना ले जा करके जो उसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो इमेजिनरी लेवल पे होता है। तो ये भी एक बिहेवियरल स्ट्रैटेजी के रूप में काम करता है। उसी तरीके से हम एक प्लेजेंट इवेंट शेड्यूलिंग कहते हैं। जैसे CBT में हम अगर लोगों के एक्टिविटी शेड्यूल प्रॉपर नहीं है तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना एक्टिविटी शेड्यूल बनाइए और उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स रखिए जिससे आपको प्लेजर मिले, आप प्लेजेंट फील कर सकते हैं। तो प्लेजेंट इवेंट शेड्यूलिंग एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है स्ट्रैटेजीज के रूप में, अगर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। प्लस ग्रेडेड चैलेंजेस भी एक स्टेप होता है कि सब्जेक्ट अगर किसी चीज को फेस नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में, तो हम उसको डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लें, जिसमें उनकी डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट हो और हम लीस्ट डिफिकल्ट से मोस्ट डिफिकल्ट की तरफ उसको इंकरेज करते हैं, मूव करते हैं। तो ये कुछ प्रकार की बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज हैं जिसको कि आप CBT में यूज करते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड बी familiar with these names even if you don't know this. Sir, I would request you to please wind up the session, क्योंकि बच्चों के अगर कुछ questions होंगे तो हम वो भी हाँ, लेके बस सकते जस्ट हैं। 1 मिनट, एक लास्ट में है Okay. या कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। Sure, इसमें sir. हाँ, इसमें हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव लेवल पे आप कैसे सब्जेक्ट को इनकरेज कर सकते हैं। इसमें हम उनको इस बात पे फोकस करते हैं कि आप ऐसे एविडेंसेस बताइए जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करते हैं या नहीं करते। वो उसको कॉग्निटिव लेवल पे सोचना होता है। और CBT में एक्सपेरिमेंटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि हम सब्जेक्ट को इनकरेज करते हैं कि कोई भी चीज अगर वो एक्सपीरियंस करता है तो वो एक्सपेरिमेंट्स करके खुद देखे कि वो चीज सही है कि नहीं। क्योंकि जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखता है तभी वो चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाता है कॉग्निटिव लेवल। तो उसको हेल्प किया जाता है अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको सोचने में हेल्प किया जाता है कि आप, अगेन ये डिस्टॉर्शन से जुड़ी हुई चीज होती है कि आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग ना रखें, आपको ग्रे एरियाज के भी इस बारे में सोचना चाहिए। या जैसे बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग, आप एक्सट्रीम पे मत जाइए कभी भी, आप मिडिल में चलिए या ग्रे एरियाज के बारे में भी आप सोचिए। उसी तरीके से रीएट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि अगर आप जिस प्रकार से सोचते हैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए कि आपको कितना कॉस्ट हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। और फोकस करना शुरू करिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो ये कुछ ब्रीफली कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसका इस्तेमाल हम CBT में करते हैं, और इसके बहुत डिटेल प्रोसीजर्स हैं जिसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करूंगा बिकॉज टाइम भी खत्म हो रहा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो CBT में आप ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इनसे इन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल आस्क स्टूडेंट्स इफ दे हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस दे कैन आस्क। और अगर आप अभी नहीं भी पूछना चाहते हैं तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, बट अगेन
questions are welcome. Students, do you have any questions? यस मैम। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो मैलएडैप्टिव बिहेवियर्स के मेंटेनेंस के बारे में बताया है कि उनको जानना बहुत ज़रूरी है, जी अदरवाइज तभी आप उनको डील कर सकते हो उनके मैलएडैप्टिव बिहेवियर को। तो मेंटेनेंस यूजुअली आपको क्या लगता है कि क्या-क्या मतलब ऐसी सिचुएशंस हैं जो ऐसे बिहेवियर को मेंटेन रखती हैं और उसको कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि मैं ये बात सच में समझ रही हूँ कि जो मेंटेनेंस वाला फैक्टर है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आप उनको बता दो, सिखा दो, बोल दो, लेकिन अदरवाइज जो उनके आस-पास के यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर वो वैसे ही रहेंगे तो उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, इसमें अगर मान लीजिए आप फैमिली के एस्पेक्ट की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एडिक्शन में आप चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और आपने ये कहा है कि अब आपको कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस यूज नहीं करना है, ठीक है, लेकिन वो घर में ब्लैकमेल करके पैसे ले लेता है लोगों से, पेरेंट्स, घर वाले फैमिली प्रेशर में आकर के उसको पैसे दे देते हैं, ये उसके बिहेवियर को मेंटेनिंग फैक्टर्स देते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम ओसीडी में बात करें, ठीक है, ओसीडी में एक चीज होती है, इसको कहते हैं प्रॉक्सी कंपल्शंस। ओसीडी में फॉर एग्जांपल वो उसका कोई कंपल्सिव बिहेवियर है, ठीक, कंपल्सिव बिहेवियर अब वो खुद तो नहीं करता है, बट वो अपने घर वालों से कहता है कि अब आप करो इस चीज को, कि मैं कोई चीज रिपीट करता था या मैं कोई चीज बार बार टैप करता था, अब आप कर रहे हैं मेरी जगह। तो मेंटेनिंग फैक्टर्स में आपको डिफरेंट डिसऑर्डर्स में थोड़ा सा स्टडी करने की आवश्यकता होती है कि वो कौन से उसकी एस्पेक्ट्स हैं बिहेवियर के जो उस बिहेवियर को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो हो सकता है लोगों को ब्लैकमेल कर रहा हो, लोगों को मार रहा हो, या लोगों से उन चीज़ों को करवा रहा हो। तो मेंटेनिंग फैक्टर्स को हम उस तरीके से थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। तो सर इसका सोल्यूशन कैसे हो निकलेगा? जैसे मान लीजिए अगर उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जो हाँ, लोग फिर हैं आपको फोकस तो करना होगा। देखिए, सीबीटी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि सीबीटी कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो आज डिसाइड किया है 4 सेशन बाद भी आप उसी पर स्टिक करेंगे। यू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन, यू गेट न्यू इनसाइट उसके थॉट्स के बारे में, उसके मेंटेनिंग फैक्टर्स में। यू हैव टू मेक अ चेंज इन दिस स्ट्रेटजी। तो वो एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस है, तो उसको आप समय के साथ ही चेंज कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर दैट। ओके सर, ओके, एज पर रिक्वायर्ड। यस, एज पर योर रिक्वायरमेंट। Any other questions? Any other questions related to strategies or the concepts of cognitive behavior therapy? I suppose there are no questions. I would like to thank Nikhil sir for letting this lecture in terms of a very simple language, because cognitive behavior therapy के concepts बहुत difficult हैं अगर उनको सही से portray ना किया जाए। तो I'm really thankful to sir that he has used a mixed language first of all, and उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी easy कर दिया concept को। Sir, Department of Psychology would like to share with you the certificate of appreciation. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. Thank you, Megha. Thank you for inviting me. और बड़ा अच्छा लगा. Thank you, Archana. And I think ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट की तरफ से, और प्रॉब्ली एक्सपेक्ट करूँगा कि फ्यूचर में भी इस तरीके की चीज़ें चलती रहें और हम सब इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Vivek, I would request you to end the session. Okay, ma'am.